Gurudev, then one disciple may be crying, haha, I remember Gurudev used to keep all his rupees underneath his pillow at night time. I used to take it. Alas, where has such a Guru gone? According to that much we receive from Gurudev and Vaishnavas, then to that degree we'll feel separation from them. But like, they are transcendental personalities. But they are transcendental personalities, and we are conditioned souls. Therefore, how we can understand them? What is transcendental cannot be understood by the materialistic person. Therefore, Srila Gurudev said, when it comes to glorifying the Vaishnavas, then conditioned soul will understand by hearing from scripture. Vaishnava has 26 qualities: Maun, Satyam, Satyasankalpa, Sarvabharakaraka. 26 symptoms of Vaishnava. But what do? We say, oh look, these symptoms are there in a Vaishnava, therefore he's a Vaishnava. Or these symptoms are not in a Vaishnava, therefore he's not a Vaishnava. But we don't even know what to look for in a Vaishnava. Therefore Vaishnava has one symptom, Krishna Sadhana. He is completely surrendered to Krishna, therefore that is that symptom which makes him Vaishnava. Therefore that is the Angi. The symptom of being surrendered to a Hari Guru Vaishnava, this is the Angi, the main symptom of Vaishnava. And all the other 25 symptoms, they are called Angas. So how much a devotee is surrendered to Hari Guru Vaishnava, that much we can understand only according to our ability. So Srila Maharaj, Srila Maharaj used to say, Krishna soul has no power to glorify Guru, no power to glorify Vaishnavas. Because how we can understand their Vaishnavata or their Guruta? We cannot understand. Anyway, or whatever that may be. So we have to speak the glorification of the Vaishnava. This is for our own purification. In Bhagavad says, O Vaishnava Thakur, seeing you is perfection of the eyes. O Vaishnava Thakur, speaking your glories is perfection of the tongue. And embracing you, this is perfection of the body. But Durlabha Bhagavan Siloke. But darshan of such a Vaishnava is very rare. So I remember I had good fortune after the disappearance of Srila Nityananda Srila Govardhana Goswami Maharaj. That time I had luck, I came to meet Sri Gurudev and Sri Keshaji Gauri Mat. So that time we went to Navadvip, 1996. That time I was not initiated also. But that time I remember I had first darshan of Srila Chidukka Maharaj. So he was giving lecture and I was very amazed when I came to Granth Smriti because it seemed like everyone was pure Vaishnava. But then when I met Srila Chidukka Maharaj, I really can't understand, oh, this is amazing, this is also one, Mahabhagavat. How many Mahabhagavats in the Gauri Granth Smriti? I was like amazed. So Maharaj was speaking, and I remember thinking that time, oh, this is just like Srila Govardhana Maharaj, not different. But I was a little afraid to approach him. So after the class, he was there outside Srila Param Gurudev's Samadhi, and he was trying to put on his shoes. And it seemed like a long time, he couldn't get his foot in. So I took my courage and thought, I will also do, no? So when I touched his foot to push his shoe in, then he shouted, ah! I thought, maybe Maharaj has a broken toe when I pushed his toe. Then Maharaj said, foot dust, foot dust. Don't be shy to grab the foot dust of the Vaishnavas. That was my introduction. So I know I had good fortune. Like PureBhakti.Tv was saying that when Srila Maharaj came to Keshaji Gauri Mat for Janmashtami, then I was astonished, oh, he has no sevak. And I was asking them, what's going on? Everyone was afraid, no? And I said, okay, I'll give it a try. Maharaj is always very kind to me. So whenever Maharaj would come for parikram in Keshaji Gauri Mat, or when he would be in Navadvip, then I had that good chance to stay in his room. So his character was very much extraordinary. But Maharaj was always so much absorbed in thinking, chanting, or something, always something he was thinking, some planning, making some shlokas. So sometimes it would be that long time, then he would open his eyes, and he would say, just see, Maharaj, Krishna's Kumara, huh? No. There was one sadhu sleeping, one Muchakunda. So
Muchukunda Maharaj, when he's had darshan of Krishna, when Krishna came into his cave and he burned Kalyanam to ashes, then Muchukunda was looking at the feet of Sri Krishna. And he was saying, oh, this person's feet is so soft. How could he have walked on the stony path to come to this cave? Then Maharaj said, but the gopis, but Muchukunda didn't do anything about it. Only how soft is Krishna's feet, but there, he stopped there. But the gopis, when they saw the softness of Krishna's feet, then they decided, we want to keep the feet of Krishna here on our bodies. So Maharaj said, that's the difference between Muchukunda and the gopis. Both realized the softness of Krishna's feet, but Muchukunda didn't do anything. So Maharaj always, I don't know what he was thinking, but always absorbed in some thinking, some smaran, some chanting. One time I asked him, Maharaj, what is your seva? Because he didn't say he was doing very much. Maharaj, what is your seva? He said, oh, my seva is thinking. I said, why? He said, because in Vedanta speaking, no one is thinking. So I have to think for all Vedanta speaking. So Maharaj was very philosophical. Also, he was a very expert poet in Sanskrit, in Bengali. His English was first class, his Hindi was nice also. So, one time I remember Gurudev was saying, in our Sampradaya, there's a necessity of someone to go through the 550 sutras of the Vedanta, and to find the commentary of the Srimad Bhagavatam. Because Atmayam Brahma Sutanam Bharata Tuvinina Gayatri Vasirupaso Veda Atmi Paridunita. The real meaning of the Vedanta is found in there in Srimad Bhagavatam. So Gurudev was saying, we need someone to go through the Vedanta and find the explanations in the Bhagavatam. Then Gurudev said, but I think there's only one person in our Sampradaya qualified for that. That is Pujapad Srila Maharaj. So how much he was a learned person, you could understand. He was very, very humble also. I heard that Param Guruji had some desire to make him acharya. So one time I asked, Maharaj, you're not making any disciples. He said, no, in front of my Gurudev I promised, this life I'll never make any disciples. So on Srila Maharaj's Vyas Puja, they used to make one seat and the flowers and everything. But Maharaj, he would not sit, only he would sit on the ground and he would take pictures of Srila Gurudev and Srila Maharaj and put that on the seat, and then he would sing Vaishnava Thakur and weep. So much attachment he had for the Vaishnavas. And he said, I don't have to make any disciples because all Narayan disciples, they're all my disciples. I don't need separate. But how much, I remember when we would go another week, Parikram, Maharaj would go there to Bhaktivinoda Thakur Samadhi, how much he would weep there. Some people used to think, oh, Srila Maharaj is not very rasik because always he's speaking against Radharani and taking Krishna's side. One time Maharaj said, who has love? Do the gopis have love or does Krishna have love? Because we always hear the gopis abusing Krishna, but we never even one example of Krishna using bad language for the gopis. Therefore, really, the gopis have so much affection. There were many people used to think, oh, Srila Maharaj, he is not Rupanuga, he is not Raganuga, because always he's speaking some opposite thing. But one time someone said, but we never see anyone weeping like Srila Maharaj at the Samadhi of Pan Gurudev or the Samadhi of Srila Thakur Bhaktivinoda. How much he would weep and how much he would manifest his deep, deep feelings of humility. So he was very, very renounced, extraordinarily renounced. One thing I liked about him especially, he never cared what anyone thought. Only, what he took from his Gurudev and the Vaishnavas, that thing was his life and soul. So one speciality, Gurudev said that he would never criticize you behind your back. If you wanted to say anything, then he would say it directly to your face. So I had many occasions to watch that also. One time there was one man who came in Navadvip Parikram. Then Maharaj asked him, are you having sex with her? The man's wife was there. Are you having sex with her? Then the man went, yes, I am. And Maharaj, oh, get out of here. No, I don't like to associate with animals. Out, get out. If I see you, my body will be destroyed. Then the man was shaking, then Maharaj was, oh, you are backwards. You have come here on Parikram to enjoy. You have not come here to do any seva. And Maharaj was abusing him, maybe 5 minutes. The man was shaking, then he ran away. Then Maharaj said, oh, do you know who he was? No, Maharaj. Oh, he is a millionaire, crorepati. But because I don't need anything from anyone, I always speak as I like. That is my freedom. So I saw that he never, even his own sevaks,
Why Maharaj never had any sevak? Because Maharaj was even never thinking, if I treat my sevak nicely, he'll stay with me. Even sevak had some fault and Maharaj would give him a broadside, that's why everyone used to run. Never how much he was without self-interest. We're thinking if I speak strong to my followers, they'll leave me, they want me to pay 500 rupees every year. And Maharaj never cared for that. Even on sevak, he would. Even some people used to say, Maharaj, don't be so rough on your sevak. And he said, I don't care for anyone. So he used to often say, my goal is to die unknown and unloved. He said, if someone can die without anybody knowing where he dies, then that life is successful. So he was so much renounced. Even in old age, he never liked to take seva from anyone. Even in old age, he would try to sew his own shirts, he would make his own hats, he would cook with his own hands, even he would wash his own pots, but he never liked to take seva from anyone. Yeah, the worst train in the world, Tufan Express. Maharaj would always come on that train. So much renounced. Even all his bank account he used to give to Gurudev, the last time giving everything to Gurudev. So, also his Hari Katha was very, very powerful. He used to say, because outside in Gurudev's room there was a big crowd, always. Then Maharaj said, why there's a big crowd up there and in my room no one ever comes? He said, because everyone is afraid of me, because I always speak the truth, therefore nobody likes to come and see me. So but his door was always open. So his door was always open. So I remember one more. So I heard Srila Chirikamai's wife was also a disciple of Srila Param Gurudev. Very, very, very dear to Srila Param Gurudev. Therefore, when Srila Chirikamai wanted to renounce, Param Gurudev was a little bit hesitant because the relation with his wife as a disciple, his wife was so much attached to him. How much obstacle for Maharaj to come to the mat. Like Maharaj said this morning, we haven't left anything. Everything left us, then we came to the mat. And someone who really renounced, they have wives, children, wealth, everything, but Maharaj left that. So his wife used to come at night and clean his shoes outside his room. But Maharaj would always abuse her so much. So one time she said, oh, if you will not keep me as your wife, then I will burn myself to death. And Maharaj said, if you have kerosene, I have matches. So he was very, very strong like that. He said, when he left home, he said, when I left home, my mother was crying, my father, my children, all my relatives, all were weeping, but I never looked back once. I never turned around. He said, let the dead bury the dead. So Maharaj so much renounced, so much strength, but he was so much affectionate. One thing people, I don't realize so much, how much Maharaj was affectionate. More than millions and millions of mothers. So much kind. One time I remember Gurudev chastised me. Gurudev came for some lecture and I was doing kirtan, so I sat down. I didn't stand up. The Gurudev said, I won't say what he said, you think you're so good, you look so great, you don't even have to stand up for your own Gurudev. And Gurudev was abusing and I was really, because I didn't stand up because I was doing kirtan. Then Gurudev asked, what are the glories of the disciple? Then he asked, oh, Ravana, you should stand up. What is the glories of the real disciple? Then Gurudev said, the first glory is he never stands up when Gurudev enters the assembly. That is the real symptom of real disciple. So I was feeling a little pain. Then Gurudev said, I remember. He said, does Srila Chirikamai ever abuse you like that? I said, no, only you do. Maharaj only has sweet words. Then Gurudev was laughing. Oh yes, because he knows that you belong to him, therefore he's always very sweet to you. So his disappearance also very extraordinary. There's one thing I want to say. Even Vaishnava is in a position of sickness, even then we cannot understand him. So Maharaj was in intensive care, when the oxygen is like unconscious. Then someone had sent some tulsi leaf from Vrindavan. And I was thinking how I can give this in Maharaj's mouth, because oxygen mask and everything. And also so many nurses and doctors. So I said, Maharaj, someone sent tulsi from Vrindavan. And I think that Maharaj, amazing. He opened up the oxygen mask.
put in. So even he's like unconscious, but everything he knows. And when, remember Gurudev was sick that time in the next hospital, so we were going to take Maharaj to Navadvip. So in the morning we went, and Maharaj was unconscious, so many tubes, and Maharaj, now we're going to Navadvip. Then Maharaj was throwing off the blankets and trying to get up. Yes, hello. Even unconscious, so much he knew everything that was going on. So of course I must have done so many offenses. So anyway, Hari Bol. So I beg Brahma, Vishnu and Mahesh, Srila Maharaj used to say, Srila Maharaj said, I am Brahma because I created disciples. Srila Gurudev is Narayan, and he's maintaining the disciples. And Srila Chivika Maharaj Mahesh because of destroying disciples. All the bad things that Maharaj is destroying. So always we can remember this Prabhu Traya. Naratam Srinivas Shamananda, one Prabhu Traya. But we never met them. But this Prabhu Traya, Srila Gurudev, Srila Maharaj, Srila Chivika Maharaj, we beg their forgiveness. And one thing, I remember how much Srila Chivika Maharaj, strong supporter and glorifier of Gurudev. One time he was, Maharaj, Srila Chivika Maharaj was weeping, and he said, can you understand how hard it is to bring such fallen souls on Vrindavan Parikram? And Srila Chivika Maharaj was crying. He said, in my life I've seen many, many Vaishnavas. But like your Gurudev, Srila Narayan, I never saw anyone so much udarta, so much compassion. So as soon as Srila Chivika Maharaj left, then Vedanta Smriti could kick out Gurudev. Otherwise Srila Chivika Maharaj, they never would have dared. So I offer my Pushpanjali. I pray that those three can always be present in our hearts and always guide us in the path of pure bhajan. Govardhana Maharaja, আমার সব কিছু আমাকে দিতে, আর আমার সব ওদিকে দৃষ্টি রাখে যে আমার কোনো অসুবিধা হয়, আর আমাকে तैयारी जी करते, तैयारी और विक्रम महाराज जी और बामन महाराज जी को मैं शिक्षा गुरु मानता था। विक्रम महाराज हमको कीर्तन करना सीख रहा है, अपने साथ में ले जाकर के कलकत्ता और कहाँ सब प्रचार में जाते थे, अपने साथ में लेकर दीक्षा भी करते थे। विशेष करके विक्रम महाराज जी और हमारे साथ में मित्रता अधिक थी। बामन महाराज जी के प्रति हमारा गौरव भाव था, और विक्रम महाराज के प्रति गौरव भाव नहीं, विश्रम्भ मित्रता भाव। विशेष करे যখনই আমরা एक जगह भक्ति जाति থাকতাম, ওই যে বামন महाराज সভাপতি, আর তার দুই পাশে আমরা দুইজন বসতাম, তখন আমি যা বলতাম যে বিক্রম महाराज খণ্ডন করতেন, আর উনি যা বলতেন আমি তার পরিপূর্ণ রূপে খণ্ডন করতাম। বিশেষ করে নবদ্বীপ পরিক্রমাতে সমুদ্র কাশীতে, সেখানে দুজনের মধ্যে বারবার উঠে উনি বলেন না খণ্ডন করি, আর উনি আমার খণ্ডন করেন। ওই দিন বেশ ভালো, সমস্ত শ্রোতাগণ বড় শুনে আনন্দিত হতো, আর তার মধ্যে বহু শিক্ষা ছিল। বুঝতে পারতাম বিক্রম महाराज একাধারে লেখক, সুন্দর লেখক আর সুন্দর কবি। তার রচিত গুরু মহারাজের আরতি আর আরো সব তাহার পদাবলী আছে, ইত্যাদি বহু আছে। বিশেষ করে তিনি লেখন কার্য গৌরীয় পত্রিকাতে তার বহু প্রবন্ধ ছাপা আছে। আর আপনি সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন রচনা করতেন।
আর তিনি সব কিছু জানতেন। চণ্ডী পাঠ থেকে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডী পাঠ পর্যন্ত কোনো বিদ্যা ছিল না যে জানতেন না। তিনি নিজে থেকে ওই টুপি তৈরি করতেন, নিজে থেকে তিনি ভালো নিজে থেকে সেলাই করতেন, তারপরে নিজে থেকে ভালো রান্না করতেন। অনেক লোকের রান্নাকে পছন্দ নাই, নিজে ময়দান লুচি করতেন আর আলু দম আর সকলকে খাওয়াইতেন, এমনকি অন্য লোকের পরিবেশন করতে দিতেন না, নিজেও পরিবেশন করতেন। এমন তার সমস্ত গুণে পেতেন। আবার তিনি আর বৈরাগ্যের মধ্যে ছিলেন। ভালো খাওয়া ভালো করা নিজের জন্য না, অন্য লোকের তিনি খুব খাওয়াইতেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মৃদু ভাষী ছিলেন না, রূঢ় ভাষী, কিন্তু রূঢ় ভাষীর মধ্যেও আবার তার কল্যাণ কামনা। রূঢ় ভাষী হয়ে যদি বিদ্বেষ ভাবনামূলক আছে, আর এটা তিনার রূঢ় ভাষীর মধ্যেও কল্যাণ থাকে। নিজে বাবা মা আসতেন, বাবাকে তিনি যা কাজ তিনি করতেন। আমি বলি, আপনি মহারাজ, আমি তো আমার মাতা পিতা আসলে খুব আদর করে প্রণাম করে, আপনি এইরকম করেন? জানেন? আপনি জানেন না, আপনার আমি করি যে সে নিকটে তো আছি, সময় আসবে আপনি বিপদে আমার এই জন্য এদেরকে মাকে আর বাপকে দুজনকে তুলে কথা বলতে, আর ওরা এইরকম ভাবে তার বহু সব ছিল। এরপরে भक्ति वेदांत माधव महाराज कुछ संक्षेप में पुष्पांजलि। परिमाण की काल की परिमाण की वंदे श्रीपाद पद्मः श्रीवामन नारायण त्रिविक्रमः जे शांति का प्रसादो भक्ति प्रकटे सखी ठाकुरानी के दैताय कृपाब्धये तत्तत् प्रमाणाय नमो नमः नित्यानंद भिन्नाय गौरमैकचारिणे रूपानुग प्रबलाय श्रीरागे स्वरूपिणे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अस्मद गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतकों श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी गोसाई महाराज, ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी विक्रम महाराज, ओम विष्णुपाद परिव्राजक आचार्य वर्ज अष्टोत्तर शतकों श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोसाई चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंड ज्ञापन करी। तत्पश्चात उपस्थित सन्यासी वृंद, गौरवर्तमान सज्जन वृंद और मातृ मंडली को यथार्थ दंडवत प्रणाम और अभिवादन। हम लोग सुबह से श्री गुरु महाराज और पूज्य भक्ति महाराज के अपराधिक चरित्र सुन रहे थे। हमने गुरु जी के श्री सुना, जब गुरु जी पहले बार मठ में आए तो सूचित नहीं किया था कि कब आ रहे हैं, और गुरुदेव जान करके हमारे गुरु महाराज को नवती स्टेशन में भेज दिया। उस समय स्टेशन में बत्ती नहीं थी, पूरा अंधेरा छाया हुआ था। अरे गुरु महाराज लालटेन लेकर के स्टेशन में ढूंढ रहे थे, तैयारी जी कौन है, तैयारी जी कौन है, तैयारी जी। तो महाराज जी सब पुलिस से रिजाइन दे करके आए थे, लंबे लंबे मूछ सब ये। तो बताया क्या बात है, नहीं तैयारी जी हूँ, क्या बात है। तो बताया गुरु महाराज जी ने भेजा आपको मंदिर में ले जाने के लिए। तो महाराज जी ने बताया मैं तो गुरु जी को सूचित नहीं किया था, कैसे जान गए। तो पता नहीं गुरु जी ने भेजा, तब आपको ले जाने के लिए आया। ले गए
नवद्वीप मठ में। दीक्षा के बाद जब प्रचार में जाते थे, गुरु महाराज परम गुरुदेव के साथ कभी तीनों प्रचार में जाते थे, कभी दो एक साथ प्रचार में जाते थे। एक समय परम गुरुदेव के साथ पूज्य विक्रम महाराज जी और गुरु जी दोनों गए थे प्रचार में। एक गांव से दूसरे गांव जाना, फिर बेडिंग बांधो ऐसे जाना था। तो हुआ क्या, एक गांव में हमारे छायाचित्र में सिर्फ भूल गए थे। अब दोपहर के बाद महाराज याद आया, अब समय हो रहा है, महाराज प्रसाद के बाद दौड़ना शुरू किया, खेत के ऊपर से दौड़ रहे हैं। अरे मसा क्या कर रहे हैं, क्या इधर समझ के क्यों दौड़ रहे हैं। तब तो क्या बात, छात्र से भूल गए? बोला हाँ, बोला कोई चिंता नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा। तब परम ने जाके बताया, गुरुदेव आज थोड़ा बादल सा दिख रहा है, आया छाछित तो प्रोग्राम छोड़ दीजिए, ऐसे वक्त हो जाएगा, आज लोकजन 2 दिन नहीं आएगा। परम ने बोला ठीक है, जैसे तुम लोग कहोगे। सब मैं छाया था, बारिश नहीं हुई थी। फिर ये सब महाराज जी परम के डांस खाने से बच गए उस दिन। और तीन भाई बोलते थे, देखो हमारे गुरुमय सेवक थे आनंदगमन ब्रह्मचारी, उनकी सेवा करके महाराज जी परम ने दिल को पूरा जीत लिया। इसलिए जैसे उनको कृपा करना था, ऐसे उन्होंने कृपा की, जिसको अति कृपा करते हैं, पर उन्हीं के अंदर देखा और किसमें से कृपा नहीं देखते। एक समय पूज्य महाराज जी अब नवद्वीप भजन पर बैठे हुए थे, परिक्रमा के समय था। तो महिलाएं आके कह रहे, महाराज जी आपके लिए दुकान से कुछ लाना चाहती हैं हम लोग। तो महाराज जी ये श्रृंगार मंदिर खाने बहुत पसंद करते थे। वो बार बार जीत कर मैं क्या लाओ, क्या पसंद करते हैं, महाराज जी मना कर दिया। जब बार बार पूछ रही थी तो महाराज जी बताने गाला गाली पसंद करता हूँ, ये जो गाली गाली वही पसंद करता हूँ। तो प्रणाम करके भाग गई और कुछ नहीं बोले। अब जब गुरु महाराज जी महाराज को ले आए स्टेशन से नवद्वीप मठ में, जैसे आप लोग गुरु जी मुख से सुना कि गुरु महाराज जी गुरु जी का देखभाल करना, कपड़ा लत्ता देना, सब कुछ करते थे। अब दीक्षा भी हो चुकी, अब परम दिन के जैसे गुरु महाराज सेवा करते थे, ऐसे गुरु जी सेवा करने लगे। अब धीरे धीरे अब दायित्व बढ़ गया सब में। जब गुरु महाराज जी कुछ जैसे हमारे सुना आप लोगों ने कि नाम था सज्जन सेवक, तो एक दिन गुरु महाराज जी बता रहे थे, सज्जन अर्थात सत कौन है? भगवान कृष्ण ही सत है, श्री चैतन्य महाप्रभु ही सत है, उनके जो सेवक है वो लोग सज्जन है। अर्थात थोड़ी बात ये गौर की सेवा करते थे, केवल प्रतिदिन उनको जगह साफ करके पत्तल नमक नींबू पानी देना, पत्तल यही नहीं था। इस समय जैसे सेफ्टी टैंक है, लैट्रिन ऐसा नहीं था। तो लैट्रिन करने पर नीचे मिट्टी का बर्तन उसमें जमा करता था। रात में नवरहरि प्रभु के साथ दोनों मिलकर के लैट्रिन साफ करते थे प्रतिदिन नियमित रूप में। गुरु जी तुम लोग भगवान कृष्ण में रहना चाहते हो, गुरु वैष्णव का भजन करना चाहते हो, तो वैष्णव का लैट्रिन साफ करना सीखो और उनकी सेवा करो। और उनकी सेवा से सब लोग ये इतने प्यार करते थे, पूछो सब सज्जन सेवक सज्जन, सब सज्जन पुकारते थे। बोले ऐसे सेवा करो तो तुम्हारे बिना उनका वैष्णव का चले ही नहीं, तब यथार्थ सेवक हो। जब सन्यास हुआ, सन्यास के बाद नाम हुआ बामन। बामन अर्थात क्या है? बामन अर्थात बाहला कितना सुंदर मान है गुरु वैष्णव सेवा के लिए। दूसरा अर्थ, जब कृष्ण अंतर्धन हो गए, गोपियां गा रही थी, न खलु गोपिका नंदनो भगवान, क्या तुम गोपी का दशरथ पुत्र नहीं हो? निश्चित उनके पुत्र है। ऐसे बामन अर्थात बाम न, क्या उनके बामोभाव नहीं है? निश्चित रूप में बामोभाव है। अर्थात बामोभाव जो गोपियन का अपने भजन कर रहे हैं। और सबसे बोलते थे राधा जी के नाम लेकर ठाकुरानी बोलते थे, राधा रानी ठाकुरानी बोलते थे। ऐसे बहुत से गुरु महाराज की गुनावली है। जैसा मैं गुरु जी में श्रीमुख से सुना, जब दीक्षा का समय होता, मुझे बस ऋषि लोग को भेजते, तो नबी को बुला के ला, मैं प्रणाम करता, बोले महाराज क्या कर रहे, मैं मिलना चाहता हूँ। नहीं तो मैं महाराज को बुला करता, बोले नहीं आज मेरे जाने की बारी है, तू नहीं कहना कुछ। तो महाराज सस्ता प्रणाम करे, बोलते महाराज जी
महाराज खट से उतरने समय नहीं देते, तुरंत आके ऐसे करते, फिर महाराज जी को प्रणाम कर, दोनों प्रणाम करते, पाप कार्य में लिप्त होने जा रहा हूँ, मुझे आदेश दीजिए, मुझे रक्षा करे, ऐसे बोल के जाते थे। एक समय जब पुरुषोत्तम मठ में आए, हम लोगों से पूछा, एक श्लोक की व्याख्या अर्थ पूछा, सबई पुंसाम परो धर्म जटमुक्ति रधक सजे, तो मैं बताया पुरुष मात्र ही धर्म है। बोले पंडित शिवानंद को बुला, उनको बुला के ले गए, तो तीन समाज वही बताया पुरुष मात्र के धर्म है। तो बोले क्या स्त्रियों का भजन अधिकार नहीं है? तो सिर्फ आखिर में गुरु ने बताया पुंसा मतलब पुरुष नहीं, प्राणी मात्र का ही धर्म है भजन करना, ये हम लोगों को समझा दिया। जब गुरु महाराज असुस्थ होकर सिलावाटी में थे, तो महाराज जी के साथ कुछ बात परिव्राजक महाराज, मैं और 2-4 गए थे। उससे हम लोग का तीन सन्यास नहीं हुआ था। जब हम लोग पहुंचे, मैं गुरु ने प्रणाम किया, उस समय गोपीकांत गुरु सेवा करते थे, यही प्रणाम किया, बोले नवीन जल्दी वाले फटाफट बेटी बांध लो। बोले क्यों, क्या पहले तो पुलिस का वारंट आ गया है, अगर नहीं जाऊंगा जबरदस्ती पकड़ कर ले जाएगा, क्या जरूरत है, आत्मसमर्पण सरेंडर करने ठीक है। आने के बाद कलकत्ता स्टेशन में उतरने के बाद उस समय सिंघानिया प्रभु के बेटियां सब गई थी पूरी, उन लोग गाड़ी प्रस्तुत था, उसे लेकर के सिंघानिया प्रभु के दूसरे मकान में ऑफिस के कोई गेस्ट आने पर खड़ा तो उधर ले गए। और दोनों को मैं बैग का चाबी दे दिया और मैं गया सिंघानिया घर रस्सी बनाने के लिए, रस्सी बना के ले गए। तो बैग में ब्रेकफास्ट दोनों खा करके दोनों हंस रहे हैं। गुरु महाराज जी महाराज टिकलिंग कर रहे हैं, मालूम नहीं क्या बात है। गुरु महाराज जहाँ तेरा बैग खाली है, बोले मेरा बैग खाली तो आप कभी होगा नहीं, आप लोगों के लिए तो बैग भरा था, अब आप भर जाए, कोई चिंता नहीं। अब दोनों आपस में बात कर रहे हैं। गुरु महाराज जी बोल रहे हैं कि मैं आपसे पहले जगह से चला जाऊंगा और आपको बहुत कुछ करना है। महाराज जी बताया मैं आप रोगी हूँ, मैं क्या करूँगा। तब गुरु ने बताया नहीं, आप अभी समझेंगे नहीं, बहुत जल्दी समय आ रहा है। जो गुरु महाराज जी पढ़ो, एक काम आपके लिए बाकी रखा है, जो आप करेंगे आप समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, और मेरा ऐसे हाथ का रोग है, मैं तो कुछ करने लायक नहीं रह गया। जब हमारे पहली बार प्रचार में गए विदेश में, विपुल प्रचार हो रहा था, मान कर मैं याद दिलाया, तब बेजार अमेरिका बैठ करके महाराज जी रोते चिट्ठी लिखाया मुझको, ये उनको चिट्ठी भेजा। तो याद आया महाराज, हाँ बड़े तेरे गुरु ने बताया था, और अब मैं समझ रहा हूँ क्या सेवा वो हमारे जी रखा था गुरु महाराज जी ने। कभी भी महाराज का आसन में नहीं बैठते थे। मथुरा में जब प्रवचन करने जाते पूछते नवीन ये किसका आसन है, बोले महाराज जी, पहले इसको ले जाओ घर में, तब मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, थोड़ा शर्माते थे। जब महाराज प्रचार करते थे, इस कर्म महाराज प्रचार से अभी भी झुंझलाते हैं, प्रचार को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। इस कर्म और सब गौड़ियों को मिल करके प्रभुपाद के सेमिनार करते थे। असल में से इस कर्म क्या करते थे, उनका रिकॉर्ड करके दिखाते हम लोग क्या प्रचार हो रहा है। तो महाराज जी को लोग बहुत बदनाम थे इस कर्म वालों ने। विदेश में हमारे सिंगापुर में थे, और हमारे मठ के सब भक्त लोग सब सही धज करके जाने के लिए तैयार हैं। चित्र कृष्ण प्रभु जाके बोला, महाराज जी हम लोग मायापुर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? इस कर्म, किस लिए कि प्रभुपाद के इसके विषय में उनका उधर कुछ नगर संकीर्तन का हुआ इस कर्म में। तो गुरु महाराज बोला कोई नहीं जा सकता है, जो जाएगा वो मठ से निकाल दूंगा। तो आचार्य हमारे आए, आके बोला महाराज जी हम सब इस्कॉन मंदिर में जा रहे हैं। बोले क्यों? बोला ऐसा सभा है। बोले नहीं कोई नहीं जाएगा। बोला क्यों? बोला हमारे जो मठ के सेक्रेटरी हैं, जो हमारा मठ के मालिक हैं, उनके लिए बदनाम कर रहे, उनके पीछे पड़े हुए हैं, और उनके तो पैर चाटने के लिए जाओगे, जो जाएगा वो सबको मठ से निकाल दूंगा। किसका हिम्मत है? आज मठ के बाहर मैं भी देख लेता हूँ। महाराज कितना उनका मुक्ति भाव, दोनों का तीनों में कितने मुक्ति भाव है। तो जो जाएगा वो मठ पे कोई वापिस नहीं आएगा, मैं भी बता देता हूँ। पूज्यवर्ती महाराज जब हम लोग पहले मथुरा आते थे, हम लोगों को रुकना पड़ता था चिचुड़ा में। उस समय मठ में कोई कुकर नहीं था, प्रेशर कुकर। सबसे पहले पूज्यवर्ती प्रेशर कुकर लाए थे। तो सब हो गया रसोई, और समय बताया नवीन तो परिवेशन कर, प्रथम करने लगा। तो बताया कुकर का हम पहले थे, मैं नहीं जानता था क्या चालाकी कर रहे हैं। तो बताया चम्मच से लेकर के उसमें ऐसे ठप ठप करना है। बोले क्यों? बोले महाराज से नियम बनाया है। एक बार क्या बोल गई, दोबारा जोर जोर से बोले महाराज रूलर का हमारे
सोचेंगे प्रसाद सेवन हो रहा है, बहुत खुश होंगे। तो मैं ऐसे किया, जोर शब्द किया, कौन है? मैं तो बहुत खुश हो गया, 2 हाथ में मैंने मान कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो क्यों ऐसे कर रहा है? सुबह ने बताया कि आप ऐसे नियम किया है। सुबह से भाग गए, सारा दिन मौका आया नहीं, गाली से और कुछ बात मित्रों जी जो प्रेमानंद प्रभु को और मुझको दोनों को बहुत स्नेह करते थे, थोड़ा पंडित देखा करते थे। एक बार गुरु महाराज जी भुवनेश्वर में थे, प्रेमानंद पार्टी लेकर के पुरी जा रहे थे, भुवनेश्वर में जाके प्रणाम किया। तो गुरु महाराज ने पूछा कहाँ जा रहे हो? पुरी। चातुर्मास का समय था। बोला ध्यान रखो, जगन्नाथ जी बहुत कुछ खाते हैं, सावधानी से खाना। बोले क्यों? महाप्रसाद तो है। हाँ महाप्रसाद सभी तो है, जो पटल खाते तो पटल मत खाना, ये जो देख करके प्रसाद पाना, ये सब करना। चातुर्मास साधक जगन्नाथ के लिए नहीं, साधकों के लिए देख करके ये करना। एक बार गुरु जी बता रहे थे, तो मठ में आने के बाद मैं पूछा, बहुत लोग मठ में आते हैं कि कोई कुछ दिन के बाद चले जाते हैं, कोई भजन उन्नति होता है, किसी ने क्या कारण है? तब गुरु ने बताया, देख किसी ने सागर उतारा, कोई किया बनी, कई उखाड़ा गिरी दरकर, कोई सिखाया भी, क्या कहूँगो सीतानाथ को मैंने किया चोरी, सही वंशज भगवान दे दिया की चलोरी। इसका अर्थ समझा नहीं? बोले देख, जब भगवान सीता देवी को रावण चुरा के ले गया तो हनुमान जी जय श्री राम कह करके सागर उतर के चला गया। किसने सागर उतारा? कोई किया मित, और सुग्रीव जी भी क्या दिया? भगवान राम से मित्रता स्थापन की। कोई उखाड़ा गिरी दरकर, जब लक्ष्मण को सेल लगा, हनुमान जाकर गंगा मदन को उखाड़ के ले आए, और कोई सिखाया नहीं। जब बाली का वध किया तो लक्ष्मण को जाके भेजा, लक्ष्मण को भेजा भगवान राम ने, कुछ नीति सीख आओ। और सब बंदर वंश में है। एक बंदर को ले दिया, पहले को पकड़ करके गले में रस्सी बांध करके फिर सिखा रहा है। तो रोते हुए राम भगवान राम से प्रार्थना कर रहे हैं, मैं तो वही वंश का हूँ, मैंने क्या चोरी किया? जैसे अरेस्ट कर भेजा, कभी ऐसे अरेस्ट कर ले जा रहे हैं। ऐसे जिसका जो स्वीकृति है, इस स्वीकृति के हिसाब से कुछ दिन मठ में रहते हैं, चले जाते हैं, कोई कुछ भजन उन्नति करता नहीं करते हैं। इसलिए मठ में रहने के लिए गुरु वैष्णव के अनुगत में करके सेवा करना पड़ेगा, तभी जीवन सफल होगा। मेरी घंटी बज चुकी है, मैं नहीं सोचूंगा कि गुरु जी आनंद घंटा बजाने में समय लेता ही रहूंगा, जैसे पूरी मर्जी की ऐसे नहीं करूंगा। हरे कृष्ण वंशा मीनू 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 कहाँ है? इधर आप डिलीवरी के मेनू दीजिए। 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट समझ है। मीनू को था Nama Maharaja